ruling which is being a precedent which you yourself sitting in the chair is quoting is not even being heard by the members of the opposition, and they choose to walk out on an issue which is on unity of this country. And this house, whether you are in Rajya Sabha or Lok Sabha, what more can be important than the unity of this country, sir? At that time, we have learned senior member from another party in the opposition talking to us about the role of the... Honorable members. This is diversionary. This is diversionary. We need to address this question of whether this country can be divided, even as a wishful thinking, Honorable by a member in the Lok Sabha. Can any member here talk of anything else more important than that? Okay. Honorable members, one second. Please, one second. Please, sir. Please. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members. Oh, one second. Please take your seat. Nothing will go on record unless I say, please. Honorable members. One second. Jharkhand ka nahi hai. Honorable members, any challenge to the integrity of this nation. One second, sir. Sir. Listen to me. Nothing will go on record, Dr. Keshav. Nothing. Dr. Keshav, nothing. No. Can you? I am sure, honorable members, I have no doubt we represent 1.4 billion people. And it is our constitutional obligation. Any challenge, I am making a general proposition, and no one should disagree with that. Any challenge to the sovereignty and integrity of this nation has to be resisted with the full might of every institution. And this house, this house is seized of the matter. And I would greatly appreciate that the House in one voice reflects the mindset of 1.4 billion people, that such an attempt from any quarter, within or outside, has to be met with unitedly, effectively, and has to be neutralized. Matters to be raised with permission. Sri A.D. Singh, not present. A.D. Singh, oh, I should have noticed your presence. I'm here, sir. India is the third. Can I start or will he speak? He has a point of order. Okay. 1 second. You are raising point of order under which rule? 8 sub point 5, sir. 230? Rule 238.5. A member, while speaking, shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. So, Honorable Leader of the Opposition, he referred to a constitutional authority without having submitted a motion and having the motion accepted by the Honorable Chairman. So, therefore, whatever he said must be expunged from the record, sir. Because this pertains to a very high constitutional authority. Thank you. Narasimha, this will look after. Please, Mr. A.D. Singh. India is now the third largest aviation market in the world, and various airlines are increasing the number of aircraft that they are buying, and the government is also expanding the aviation network around the country. But unfortunately, with the kind of planes that the Indian aviation industry has ordered, correspondingly, we don't have that much of pilots who can do their job, because there's a lack of availability of pilot, and particularly for that Cat 3 where landing training is also not there. And government has various, as of now, 34 DGCA approved flying training organizations are in the country. Some training centers operate simulators. Private flying academies are also getting licensed. Airlines are also going ahead with their own training program, but all this is not sufficient. The training facilities in India is grossly inadequate. There is an urgent need for more pilot training in flying institutes.
DGCA should play a decisive role to coordinate flying training organization, pilot training in airlines and various examinations, etc., connected with the training of pilot. I urge the government to take urgent steps so that there is no shortage of pilots in the country in the future. Thank you. Thank you, Mani Sri A.D. Singh ji. Mani Sri Rajiv Shukla ji need to address alarming rise in student suicides in the country. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं एक अति महत्व के प्रश्न पर आज सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से छात्रों की आत्महत्या हो रही है, जिस तरह से कोटा अन्य जगहों पर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक गंभीर विषय है और इसमें पूरे समाज को सोचने की बात है। किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं, राज्य सरकारों को दोष देने की बात नहीं। ये एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है। 35,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि कोई फेल हो गया, अगर किसी एग्जाम में कोई अगर जो है उस तरह से मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मैं इस पर चाहूँगा कि पूरे समाज को इस तरफ ध्यान दें। अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन उस दिन था परीक्षा पे चर्चा, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माता पिता जो बहुत दबाव डाल देते हैं छात्र पे, उससे भी छात्रों के अंदर बहुत बड़ा जो है संकट, उनका मानसिक संकट पैदा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के जो 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था इन्होंने CSDS ने, उनके हिसाब से जो 35,000 छात्राएं, उनकी मुख्य रूप से वजह ये थी कि several factors contributing to this distressing trend, including academic pressure, mental health issues, isolation, financial concerns, lack of support and the stigma surrounding failure in competitive exams. अगर बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आप फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर हैं या एजुकेशनल सेंटर हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी लोग रखने चाहिए। वहाँ पे मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के सेंटर भी खोलने चाहिए जो उनको इस तरह की सहायता कर सके। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, क्योंकि माँ बाप पेट काट के बच्चे को भेजते हैं तो दबाव डालते हैं कि भाई हर हालत में तू क्वालिफाई कर, अगर तुमने क्वालिफाई नहीं करा, कुछ नहीं बना, तो ये जो है हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस दबाव में बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और ये किसी एक के विरुद्ध या किसी एक के उसमें नहीं है। सारे लोगों को मिलकर इस पर सोचना पड़ेगा। जो मेरे 5 सुझाव हैं कि इसमें जो है एक तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में क्रिएट करनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, टीचर और स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे ऐसे छात्रों को उत्साहवर्धन करें, उन्हें निराशा के दौर से निकालें। और इसके बाद जो है फर्स्ट एड का भी इंतजाम होना चाहिए। जो इस तरह के मेडिकल सेंटर जो ये हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए गवर्नमेंट को भी और तमाम NGOs को भी। और जो स्टिग्मा है ये कि हम फेल हो गए तो सब खत्म हो गया, इसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस पे जो है एक पूरा अवेयरनेस जन जागरण अभियान चलाएं पूरे देश में, ताकि छात्र इस तरह का काम न करें। निर्मला जी ने वो बात कही थी, वो बात वॉकआउट सर, हमारा वॉकआउट जो है ना झारखंड पे है, झारखंड पे वॉकआउट है। माननीय श्री नवाम रेबिया जी, माननीय श्री नवाम रेबिया, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नवाम रेबिया जी, creation of separate all India service cadres of IAS, IPS and IFS for Arunachal Pradesh. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। ये बहुत ही मेरा राज्य अरुणाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए इस विषय को पहले भी सदन में रह चुका हूँ। देखिए, अरुणाचल भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब तक वहाँ अपना कादर, सेपरेट कादर ऑल इंडिया ऑफिसर्स नहीं है, लाइक IAS, IPS एंड IFS। क्योंकि जब तक अपना ये ऑफिसर आते हैं 2 साल 3 साल बैठ के चले जाते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है। इसीलिए ये मांग जो है अरुणाचल सरकार ने भी कई बार यहाँ केंद्र में रखा है और अरुणाचल विधानसभा में भी बहुत बार रेजोल्यूशन पास हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर अरुणाचल का डेवलपमेंट होना है और अरुणाचल के भलाई के लिए काम करना है, कम से कम ऑफिसर 5-10 साल बैठे तभी काम होगा। 2-3 साल में क्या काम करेंगे? इसलिए केंद्र सरकार से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अरुणाचल के लिए सेपरेट कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेपरेशन जो जल्दी किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय नवाम रेबिया जी। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी,
Demand for amendments / simplification of provisions with respect to FIR, arrest and bail. धन्यवाद महोदय। मैं आज सदन में और सरकार के समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखना चाहूँगा जो कानूनी है लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान बात कही जस्टिस फर्स्ट, और जो देश में नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उसके बारे में भी कहा। लेकिन हमारे देश में जो अंडर ट्रायल्स हैं, जब उनकी हम परिस्थिति देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज में FIR, अरेस्ट और बेल के प्रोविजंस में क्लैरिटी ना होने के कारण यह पुलिस प्रशासन के लिए एक कमाई का माध्यम बन गया है। और बहुत सारे केस भी सामने आए हैं जहां माइनर ऑफेंसेस के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है, और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है, और जिसका सबसे साधारण तरीका है FIR की धमकी। कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके पुलिस शोषण करने के लिए और किसी भी कानून के किसी भी सेक्शन को अप्लाई करके लोगों को जेल में डाल देती है। PSI रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक 5,70,000 कैदी थे, और इसमें 75% यानी कि 4,30,000 अंडर ट्रायल्स हैं। हमारी जेल्स ओवरक्राउडेड हैं, और काफ़ी केसेस में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को भी पुलिस गलत FIR करके जेल में डाल देती है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसे भी कई केसेस हैं जहां हमारे माननीय जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बेल नहीं देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाती है। इसका कारण है कि जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग बेल, जिसमें हर जज अपने विवेक के हिसाब से बेल की कंडीशन निर्धारित करता है। मैं एक इंटरेस्टिंग केस लाना चाहूँगा सदन के सामने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त यह कंडीशन लगाई कि विक्टिम जो मुजरिम है वो 25,000 रुपये का LED TV किसी हॉस्पिटल को दान देगा। एक अन्य केस में ये कहा गया कि मुजरिम 2 महीना तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल लॉज को रिपील किया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए, जिसमें FIR, बेल और अरेस्ट के प्रावधानों में conclude, time is over. Please. थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई। खत्म। माननीय श्री अब्दुल वहाब, Thank you. Mr. A. Rahim is associating concern over various problems faced by railway passengers in Kerala. Yeah, this one, Kerala, as usual, we are no special zone and all, and we are facing big difficulties, passengers. They are crowded all the railway stations, and hence, Keralites are the most respected and responsible passengers for Indian Railways, less defaulters or non-ticket travelers. 99% Keralites are traveling with tickets. And I request our ministry to go specifically 1 or 2 items. Nilambur is the station where the railway ends, and it is started by British not for the development of Malabar or Kerala. It is developed to get forces to suppress the rebellion sort of against British and take out the teak, Nilambur teak, from there to UK. That is why they started. But now, after independence, it is a good, this one, Nilambur, Shornur, and connecting from there to different places. It's happening, and Nilambur is now the Amrud railway station, also Honorable Minister included. Work is going on. The problem is the speed and the electric connection and all. So I request our Minister to look into that one. And the long pending, this one, Batheri, Nanjangud, Nilambur to Bangalore, there is an easy road, so that Keralites can, at least 150 kilometers can be saved.
So Nilambur, Nanjangud, this one projects and all that is already done PPR, and I wish the next this one minister will be looking at that one. And General Manager of Southern Railway agreed this one AC coaches from Nilambur to Ernakulam, Kottayam. So far not there. Memo trains, it is not there. And it is very difficult for us to travel. So I request our Government of India through you that immediate action should be taken for Nilambur, Shornur, Cochin and the Kottayam routes. So already we got a Rajarani Express from Nilambur to Kochuveli, but it's very difficult for the cancer patients, those who are going for all 90% cancer patients to Trivandrum, RCC. But the train stops at Kochuveli. And again from there to Trivandrum, these auto rickshaw drivers, taxis, they were filling the people, all the 300 rupees, 400 rupees for the 5 kilometers. So I request through you to not extend, to make this Nilambur Rajarani Express to Trivandrum Central. That is our most important this one for. Thank you very much. Thank you, Mani Abdul Wahab ji. Honorable Sri M. Sanmugam need to construct laying overland bridge between Dhanuskoti, Tamil Nadu and Talaimanar in Sri Lanka. Sir, for the last 2 centuries, his name is with associate. made He is to associated. provide sea communication Yes. between Sri Lanka and Indian mainland, and many surveys It's and already projects were prepared. Recently also Setubandh Canal project that would connect the Gulf Manor and the Palk Strait was conceived, and all feasibility reports were prepared, and dredging work was also started during UPA regime. Unfortunately, the BJP government came to power, it was discontinued, and ultimately it was abandoned. Our Honorable Chief Minister of M.K. Stalin last year moved a resolution in the Tamil Nadu State Assembly seeking the revival of the Setubandh project, but the Union government did not give any response. From the Indian coastal corner, Dhanuskodi, Sri Lanka, Talaimanar, it is only 25 kilometers and can be easily connected with a bridge. It will improve the port connectivity and also movement of people. Dr. A. Ramasamy Molliar Committee, which was engaged by the Union government in 1955, examined the desirability of the project and found the project feasible and viable. However, it strongly recommended an overland passage instead of channel cutting through the sea. I would therefore urge upon Union government, especially the Honorable Minister for External Affairs and Minister for Road Transport, to consider laying overland bridge or undersea bridge between Dhanuskodi and Talaimanar to improve the economic and trade relation and people movement between India and Sri Lanka at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Manya Srimati Priyanka Chaturvedi ji need to include HPV vaccines in the Universal Immunization Program, UIP. Sir, thank you so much for this time, for this important topic to be discussed. पर सर उससे पहले मैं 30 सेकंड लेना चाहूँगी जो आज सवेरे चेयरमैन की तरफ से रूलिंग आई कि अगर लोकसभा में कोई कुछ कमेंट करता है you are speaking on the subject. No, this is not going on record. अगर आप subject पे नहीं बोलेंगे, I will proceed further. Please listen to me. I am not allowing. The chair is not allowing. It has nothing to do with the allegations, you have to speak on the subject. It has nothing to do with the allegations, sir. Priyanka ji, you have to speak on the subject. Otherwise, I am calling other person. Sri Kiran Rajesh Kumar. Time is over. Question now. Sri Kiran. Time is over. Question now. Honorable Chairman, sir, today I rise to bring to our notice. Question or nothing is going on record, madam. Question or Honorable Sri Deepak Prakash ji, Mani Sri Deepak Prakash, question. Mani Mantri ji. Agriculture and Farmers Welfare. उत्तर सभा पटल. Mani Sri Arjun Munda ji, please. उत्तर सभा पटल. पहला सप्लीमेंट्री. सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्रालय को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं. उनके नेतृत्व में लगातार. हाँ, मेरा प्रश्न है सर. आप सवाल पूछे. हाँ, सवाल है सर. सवाल है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में ऐसी कृषि भूमि जिस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है कि प्रतिशतता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है क्या?
क्योंकि झारखंड में मुख्य रूप से धान की पैदावार की जाती है, जिसके लिए यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि झारखंड और पूरे देश की हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि उसके सिंचाई के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2016 के अंदर एक स्कीम बनाई गई जिसके अंदर 3 मंत्रालय, जिसमें कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा योजना बनाकर काम प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। और उस योजना के माध्यम से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार उसके अंदर काम हुआ और अलग अलग मंत्रालय ने, जैसा कि कृषि मंत्रालय के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे काम किया गया और हर खेत में पानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और AIBP योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय और वाटरशेड के द्वारा इस पर काम किया गया। और उसी का परिणाम रहा कि पूरे देश के अंदर लगातार ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है, और जिसमें जहाँ इरिगेटेड अगर खेती की बात करते हैं तो लगभग 77.9 मिलियन हेक्टर एरिया जो है इसके अंदर कवर किया गया है। और झारखंड के अंदर भी इसके अंदर लगातार क्षेत्रफल जो है क्षेत्र बढ़ा है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर झारखंड के अंदर भी आने वाले समय में जो कि अभी 1.43 लाख हेक्टर है, जो बढ़कर 2,37,000 हेक्टर हो जाएगा, और इस पे ऊपर सरकार के लगातार प्रयास है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंत्री जी। झारखंड को 2015 और 16 और 2018-19 में NDRF से सहायता दी गई थी। उसके बाद राज्य को सहायता क्यों नहीं मिली है, जबकि राज्य में कई जिले सूखे से प्रभावित हैं और जिसके चलते झारखंड आज परेशान दिख रहा है। जी, जब भी अगर कोई सूखा पड़ता है या किसान के आपदा आती है तो उस समय SDRF फंड का प्रावधान किया हुआ है, और सरकार प्रत्येक साल के प्रारंभ में हर स्टेट को स्टेट डिजास्टर फंड के तौर पर उनको फंड उपलब्ध करवाती है। और इसी प्रकार से जब उनके वो फंड पूरा हो जाता है, उसके बाद में अगर और आवश्यकता होती है तो नेशनल डिजास्टर फंड की स्टेट डिमांड करता है, और उसके इस आधार पर नेशनल डिजास्टर फंड के तहत उनको फंड उपलब्ध करवाया जाता है ताकि किसान को उसकी राहत मिल सके। और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर भी जैसा कि वहाँ से प्रदेश के द्वारा समय समय पर स्टेट डिजास्टर फंड दिया गया, और नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर उन्होंने अभी तक हमारे से कोई डिमांड नहीं की। और उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि जब 2016 के अंदर 15-16 के अंदर नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर 273 लाख करोड़ रुपए जो थे, वह अभी बढ़कर जहां मुझे देखना है कि 637 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये भारत सरकार की ओर से लगातार स्टेट डिजास्टर फंड लगातार झारखंड के अंदर भी बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य सरकार से हमारे पास में झारखंड से कोई ऐसा प्रपोजल अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उनको नेशनल डिजास्टर फंड की आवश्यकता हो। और स्टेट डिजास्टर फंड की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं, जैसा कि उनकी आवश्यकता के मापदंडों को अगर पूरा करते हैं, तो उनको तुरंत ही स्टेट डिजास्टर फंड उपलब्ध करवा दिया जाता है। झारखंड की सरकार ने जो बीच में नहीं आया, तो उसके जो उनके मापदंड पूरे होने चाहिए थे वो मापदंड पूरे नहीं किए, उसकी वजह से ये स्थिति। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर CM रमेश। माननीय मंत्री जी। On the table of the House. First supplementary, Dr. CM Ramesh. Sir, I have gone through the statement of the answer. How the PLI scheme has helped improving the tech capabilities, capacity utilization, and competitiveness in the pharma sector, especially in MSME sector. Honorable Deputy Chairman, sir, there are 2 PLI schemes in the pharma sector which have been introduced by the government, and they have 3 different objectives. One is to boost the domestic manufacturing capacity in pharmaceuticals and drugs. Other is to reduce our import dependence.
And third is to encourage product diversification in the pharma sector so that our industry can attain a dominant position in the global landscape. The first PLI scheme, which is aimed at boosting the domestic manufacturing for the KSM, the key starting material, the APIs, as well as the drug intermediates. Regarding this scheme, sir, 48 projects for 33 bulk drugs have been approved with a total committed investment of 3,938.57 crores. Manufacturing of 22 bulk drugs has already been approved, and the production capacity of 89,000 plus million tons has been committed. So the manufacturing capability has been attained. The second PLI scheme has been aimed at, is for the pharmaceuticals, and this is broadly aimed at creating global champions insofar as product diversification is concerned. Here, sir, there have been 55 selected applicants who have made an investment of 25,813 crores against the committed investment of rupees 17,275 crores. And that's been the progress of the two PLI schemes so far. Overall, we have been able to move rightly in the direction of attaining the objectives of these two PLI schemes. Thank you. Second supplementary, Dr. Sim Ramesh. Whether government may like to adopt holistic approach that involves collaboration between industry stakeholders, government and regulatory bodies, which can enhance our position as global leader in pharma sector. Manya Mantri. So any kind of cooperation between Government of India, pharma industries or the other statutory government regulatory bodies goes to foster more and more of regulatory compliance and convergences. In this regard, sir, the CDSCO, along with it coordinates the activities of the state drug control organizations and provides expert advices through statutory bodies like the Drugs Consultative Committee, along with the Drugs Technical Advisory Board. The Drugs Technical Advisory Board is also a multi-stakeholder body which includes experts from the pharmaceutical industry. Moreover, sir, a 2-day Chintan Shivir was organized last year in the month of February on drugs, quality regulation and enforcement. This was primarily aimed at reviewing the implementation and processes of the policies and programs. And in this event, state government regulators, the representatives from the state governments, from the industry, they deliberated at large on the transparency and compliance to the Indian drug standards, the regulatory capacities across states and center, the global best practices, also the introduction of newer interventions like digital tools, clinical trial standards, etc., to create a multi-stakeholder approach for the benefit of the common citizens. Thank you. Mani Sri Jawahar Sarkar. What actions have been taken to recoup the reputation of Indian pharmaceuticals that went for a 6 in Africa, in Central Asia, after several deaths took place because of exports of faulty medicines, pharmaceutical products? Thank you. Thank you. Record first that the Indian pharmaceutical industry enjoys a very good reputation in the global landscape. India is popularly known as the pharmacy of the world. Yes. Sir, in terms of volume, we are the 3rd largest in the world, and in terms of value, we are the 14th largest, currently valued at $55 billion and aim to reach $130 billion by 2030. So we enjoy a very good reputation, and especially during the COVID-19 pandemic, sir, our industry, despite the nationwide lockdown, was able to maintain a steady supply of COVID vaccines and other COVID-related medicines to more than 100 countries across the world under India's very, very unique Vaccine Maitri initiative. Our exports have also been consistently growing, sir, in the past 1 decade. However,
I would agree with the honorable members that even if there are some few isolated cases of substandard products, then we need to take some proactive measures, and that Government of India is committed to. This issue actually pertains to the Ministry of Health, sir, and the Ministry of Health has, along with the CDSCO, they take appropriate measures. They have looked into the specific issues also that they have quoted. It is under active examination, but broadly, Government of India is committed to ensuring the safety and quality of medicines. And I again repeat, sir, the brand image of the Indian pharma industry remains intact, which is evident from the fact that our exports are consistently growing. Between April to December 2023, our growth rate has been 8.19%. Thank you. Mani GVL Narsim Rao. Thank you, sir. First of all, I'd like to congratulate the Honorable Prime Minister and the government for the market access initiative through which several export promotion initiatives have been taken for the export of the pharmaceuticals. So my question is, whether the remission of duties and taxes on export products, the ROTTEP scheme, this is not, the pharmaceutical products are not included, as per my knowledge, in the list of eligible products for the ROTTEP scheme. I'd like to ask the Minister what is the actual position on this, and whether pharmaceutical products also will be considered for the benefits under ROTTEP scheme. Thank you, sir. Thank you. So we keep reviewing the products which are to be remitted under the ROTTEP scheme. I will collect the necessary details and I will inform the honourable member. Thank you. Mani Kartikeya Sharma ji. I'd like to ask Honourable Minister, what is the ministry doing in respect of exploring new markets, especially in the manufacturing? I want to congratulate that you've allowed manufacturing of medicines, especially on the which are rare genetic disorders. Question, there are please. huge market potentials. What is the ministry looking at? How is it looking at those opportunities? It is the constant endeavour of our ministry to not just expand our export presence in the existing markets, but also to keep exploring the new emerging markets. And which is why today the Indian pharma industry has its presence in over 200 destinations. We are trying to make use of our market access initiative particularly, which has a focus country approach. And we are making inroads into the Latin American and Caribbean region, the Asia Pacific region. Right now we are focusing on certain specific countries under the Latin American region, which is Argentina, Brazil and Chile, and also in the Africa, in the South Africa, in Nigeria, in Kenya. So we are making these initiatives under the MAI scheme. Apart from that, sir, we have a dedicated EPC, Pharmaxil, which also makes efforts to kind of make inroads into the markets which have an untapped potential. And lately we have concluded two very important free trade agreements, the SEPA with UAE and the ECTA with Australia. Those are also opportunities available with our exporters in the pharma industry to explore these newer markets. And the other FTAs which we are negotiating, once concluded, will also provide better access to our exporters in the pharma sector. Thank you. Question number 3, Mani Shri R. Girirajan. Thank you, sir. Honorable Minister, Mani Mantri ji, Dr. Danve Rao Sahab Dada Rao. First supplementary. Thank you, sir. Thank you for reply. Honorable Chairman, the budgetary allocations for Southern Railway, particularly for the railway projects and passenger amenities in Tamil Nadu, are very much wanting for more than 10 years. In his reply, the Honorable Minister himself has confirmed that the railways have sanctioned an amount of Rs 879 crore in the years of 2009 to 2014. I would like to know from the Honorable Minister the amount allocated to railway projects in Tamil Nadu from 2014 to 2022
and the income generated through passenger and freight traffic and other sources during the last 10 years, since 2014, and the steps to be taken by the government to complete several projects, railway projects in Tamil Nadu pending since 2008. And the list of projects actually... Please be brief. Be brief in your question. I'll conclude. List of railway projects still pending. I would like to know the exact status of the long pending railway projects, sir. Thank you. Be brief in question. I expect reply also to be brief. सभापति महोदय, तमिलनाडु ये जो राज्य है, रेल परियोजनाएं राज्यवार नहीं जोनवार होती है, और तमिलनाडु ये जो राज्य है अध्यक्ष महोदय, ये 3 जोन कवर करता है, दक्षिण, दक्षिण मध्य, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये 3 जोन में ये कवर करता है। और इस जोन में कवर करते हुए जोनवार ये परियोजना चलती है केवल तमिलनाडु के लिए। लेकिन तमिलनाडु में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अध्यक्ष महोदय हो रहा है, 2009 से 14 तक वहाँ पर 879 करोड़ प्रति वर्ष बजट दिया है 9 से 14 तक। लेकिन अब 23 में 2023-24 में 9 से 14 के 7 पट ज़्यादा, मतलब 6080 करोड़ रुपए का बजट अभी तमिलनाडु में दिया है, जो 9 से 14 तक 779 था, जो आज 6080 करोड़ रुपए का बजट वह दिया जा रहा है। और वहाँ की जो परियोजनाएं चल रही है वो अभी नई 3 परियोजना होती है, नई लाइन चल रही है, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन चल रही है। अध्यक्ष महोदय, नई लाइन 871 किलोमीटर, उसकी लागत 14,682 किलोमीटर की है, गेज परिवर्तन 748 किलोमीटर और दोहरीकरण 1,229 किलोमीटर अभी तमिलनाडु में चल रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय श्री आर गिरिराज, सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, under the Amrit Bharat Station Scheme, Southern Railway plans to complete the upgradation of 90 railway stations in this year and 15 stations in Chennai region. Sir, there is an urgent need for the 4th terminal in Chennai. There are plenty of vacant lands belonging to railways available around Perambur where the ICF is located. Sir, my question to the Honorable Minister is whether the railways could come forward to utilize the available railway vacant lands around Perambur to establish the much needed 4th railway terminal in Chennai to avoid congestion at Chennai Central and Chennai Egmore. Thank you. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग के दृष्टि से तमिलनाडु एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है और लगभग 72 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत वहाँ लिए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खाली पड़ी ज़मीन है, सबसे बड़ा ICF फैक्ट्री आज तमिलनाडु में है, जो 90 में खुली थी, जब 1000 डिब्बे वहाँ केवल बनते थे। लेकिन 19-20 में हमने वहाँ पर ICF में 4166 डब्बे बनाए, 23 में हम 2700 बनाए और अभी हमारा लक्ष्य 3241 बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी जगह है उतना उस जगह का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर M. थम्बीदुरई जी, सप्लीमेंट्री। Deputy Chairman, sir, I want to know through Honorable Deputy Chairman, what is the present status of the long pending new railway projects implementing the new railway line between Jolarpet and Bangalore via Krishnagiri and Hosur. Hosur and Krishnagiri is now declared by the central government as defense corridor. Therefore, this line is very, very important. For 35 years, this line discussion going on. I want to know the Honorable Minister, what is the present position of connecting this Krishnagiri, Hosur via Bangalore and Jolarpet? That is the thing. Thank you. सभापति महोदय, वहाँ पर 4 परियोजनाएं चल रही है। एक मदुरई बुड़ी नायकपुर, रामेश्वरम धनपुड़ी और तिंडी वनम जिंजी तिरुवन्नामलाई, मोरप्पुर धर्मापुर, ये 4 योजनाएं सभापति महोदय वहाँ चल रही है। लेकिन मदुरई बुनीकुंडूर ये तो कमीशन हो गई है और 98.53 करोड़ की लागत उसको लगी है। और जो Please, let him reply, please.
सुदृढ़ीकरण का कार्य भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, रामेश्वर धनुषकोडी ये जो है तमिलनाडु सरकार ने ये परियोजना हटाने के लिए आग्रह किया है। अध्यक्ष महोदय, तिंडिनम निजी माननीय मंत्री जी डॉक्टर एम थंबीदुरई जी जिस सवाल को करना चाहते हैं वो आप बाद में उन्हें बता सकते हैं अगर उत्तर ना हो तो। थैंक यू। डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी, यू हैव ए क्वेश्चन, प्लीज गो टू योर सीट। डॉक्टर फौजिया खान जी, प्लीज। सर माइक इज वर्किंग, इट्स ऑन। अब जी। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से एक महिला होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हम रेल प्रवास करते हैं तो टॉयलेट्स की बहुत तकलीफ होती है। इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं ट्रेन्स में, और जो मोस्ट मॉडर्न टॉयलेट है वो भी पूरा फुल होकर इस तरह ख़राब हो जाता है सर। तो ये अच्छे साफ सुथरे टॉयलेट्स महिलाओं को खास तौर पे मिले ट्रेन्स में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री। आदरणीय सभापति महोदय, अभी जो रेल में टॉयलेट बिठाए उसका पूरा सरकार कोशिश करती है कि साफ सुथरा रहने का, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त होती तो मैं उसको देता हूँ। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्लीज। Dr. John Britas. Thank you very much, sir. Sir, the Honorable Minister has spoken about the investment that is being done in Southern Railway. As you would appreciate, Kerala also is part of the Southern Railway. And Vande Bharat trains which are plying in Kerala has the highest occupancy rate in the country. Now it has proven that question, please. There is a demand for a semi-high-speed railway because of the enhanced demand in Vande Bharat. In this context, I would specifically ask the Minister whether he will consider the K-Rail project submitted by the Kerala government with the Railway Ministry. Thank you. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, अपने देश में अभी वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू हुए और हर जोन में उसकी मांग बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि 39 ट्रेन आज के दिन अपन चला रहे हैं, और जैसी जैसी ट्रेन की उपलब्धता होगी वैसे हम दे देंगे। थैंक यू। देयर आर अदर मेथड्स। माननीय सदस्य का जो सवाल है आप पता करके माननीय मंत्री जी बुलाकर उन्हें बता देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, माननीय श्री ईराना कराडी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति। धन्यवाद उपसभापति महोदय। पोस्ट ऑफिस और डाक सेवाओं के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण डाक सेवकों की होती है। ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत वर्ष से मांग है कि उन्हें विभाग द्वारा दिए जा रहे लाभ जैसे अवकाश, HR, TA, DA, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि भी दिया जाए जिसकी सिफारिश 2015 में कमलेश चंद्र समिति द्वारा भी की गई थी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? माननीय उपसभापति महोदय जी, ग्रामीण डाक सेवक हमारे विभाग के अति महत्व के एम्प्लॉइज़ हैं। हमने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वो सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं। हालांकि वो उनका ड्यूटी आवर्स 4 to 5 आवर्स रहता है, और ये 4 to 5 आवर्स में भी करीब 10,000 से लेकर 35,000 तक DA अलाउंस, उनको GDS में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वैसे ग्रेजुएटी, ग्रुप इंश्योरेंस, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट्स, एक तरीके से जो न्यू जो बेनिफिट है राइट नाउ जो हेल्थ के भी, वो सारे बेनिफिट्स हम ग्रामीण डाक सेवक को देते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, अन्य कडाडी जी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में कितने निष्क्रिय खाते और अदावित राशि है
और क्या सरकार इन निष्क्रिय हुए खाते में जमा राशि का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण हेतु करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति, वर्तमान में अनक्लेम अमाउंट जो है वो करीब करीब 25,480 करोड़ के आसपास है। हमने अभी एक स्कीम चलाया है जो अनक्लेम अमाउंट है उसको वेरीफाई करके उसके जो हेरिडिटरी में जो उसके परिवार में जो लोग हैं उनको हम खुद सामने से आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे हमने मार्च 23 और दिसंबर का मैं आपको एक फिगर देता हूँ। अनक्लेम अमाउंट हमने मार्च 23 में 21 लाख अकाउंट में 1,240 के आसपास करोड़ अमाउंट हमने उनको वापस किया है। और दिसंबर 2023 में 33.35 अकाउंट में 1,319.67 करोड़ रुपीस की अमाउंट हमने उन अनक्लेम होल्डर्स है जो अकाउंट होल्डर हैं उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको हमने वापस उन परिवार को दिया है। थैंक यू। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में लगभग 7.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। इन 7.5 करोड़ अकाउंट्स में कितनी राशि जमा है? महोदय, हमारे यहाँ टोटल 1,64,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस में जो हमारे कुल अकाउंट है उस अकाउंट में अभी तक अलग अलग स्कीम्स में, चाहे वो आईपीपीबी के अकाउंट है उसमें 8 करोड़ से अधिक अकाउंट है और उनमें मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि 47% ऑफ आईपीपीबी वो वुमेन के अकाउंट का है। मैं केवल आपको आईपीपीबी का बताऊं, 30,381, ये केवल आईपीपीबी अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और जो पोस्टल जो अकाउंट है उनमें से हमने 1.43 लाख करोड़ अमाउंट डिपॉजिट है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी। Today, post offices in our country are providing not just postal services but also many additional services like passport seva, banking facilities and other citizen-centric services. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether there has been any impact assessment study done to measure the economic impact, particularly economic impact of these new services in the post offices and the adjoining areas in rural India. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क अगर कहीं है तो वो भारत में। आज हमारे देश में रूरल में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल में है और करीब 15,000 से अधिक अर्बन में है। ये पोस्टल नेटवर्क जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। आज पहले ये केवल डाकिया डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये डाकिया अभी डिजिटल डाकिया हो गया है। ये डाकिया केवल मेल और पार्सल नहीं देता है, लेकिन आज वो बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है। हर सिटीजन्स के लिए जो बेनिफिशरीज है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रूरल में, चाहे वो वुमन का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो, या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वो सारा ट्रांजैक्शन रूरल एंड पे, डोर स्टेप पे अगर कोई चेहरा अगर भारत सरकार का सर्विस देता है तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो सारी सर्विस देते हैं। थैंक यू। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, प्लीज। सीमा द्विवेदी जी।
माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को कि संचार प्रणालियों के कार्यान्वयन में डाकघरों की स्थापना में ग्रामीणों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है और इसका ग्रामीणों को लाभ भी मिलता है। सवाल क्या है? महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि देश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों की संख्या है 16,055। तो महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि क्या ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन डाकघरों की स्थापना को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? महोदय, हाल ही में हमारी सरकार ने ब्रिक एंड मोटर्स के बेस पे हर एवरी 5 किलोमीटर्स में, और जैसे हिली एरिया हो, डेजर्ट हो या जो फॉरेस्ट एरिया है, उनमें हमारे नॉर्म्स में रिलैक्स देने के बाद एवरी सिटीजन्स को हमने टच करने के लिए हमने एवरी 3 किलोमीटर्स पे नया पोस्ट ऑफिस खुला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता होगी तो हम खोल रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले की कांग्रेस की सरकार के समय में करीब 634 पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था। अभी हमने 5,746 नए पोस्ट ऑफिस खोले हैं और 5,000 खोल रहे हैं। 10,000 से पोस्ट ऑफिस नया खोलने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी कहीं पोस्ट ऑफिस की आवश्यकता होगी तो हम जरूर खोलेंगे। हम हर सिटीजन तक पहुंचना चाहते हैं और ट्रेडिशनली बैंक जहां नहीं जाता है क्योंकि वो अनसस्टेनेबिलिटी कारण नहीं जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस देने के लिए तैयार है। अनबैंक एरिया जो भी है वो सारे अनबैंक एरिया को हम कवर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 5 पहला सप्लीमेंट्री माननीय नदीमुल हक जी। Ask whether it is a fact that between 2017 and 2021, 217 consequential accidents and 1,800 other accidents took place, and that derailments were the cause of majority of the accidents. If so, the details and the actions taken thereof. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, पिछले 3 वर्षों के दौरान जो रेल दुर्घटना हुई, भारतीय रेलवे विभाग निरंतर रेल दुर्घटना कम करने की कोशिश करती है। 22-23 में अध्यक्ष महोदय 105 रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना होने का एक कारण नहीं होता है। रेलवे ट्रैक में खराबी, रेल इंजन में खराबी, इक्विपमेंट में खराबी, ये दुर्घटना के कारण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोहरा होता है उसी समय भी दुर्घटना होना संभव होता है। तो अभी जो उन्होंने साहब ने आंकड़े बताए, लेकिन 2001, 2002 और 2004 लगभग अध्यक्ष महोदय 473, 2002 में 415 से लेकर तो 2012 में 131, 13 में 122, लेकिन आज के तारीख में 2016-17 में 104, 17-18 में 73, 18-19 में 59 और 19-20 में केवल 55 एक्सीडेंट हुए हैं। 21-22 में 35 और 22-23 में 48। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, last year, the railway spent 1,05,378 crores on its budget. So 65,000 was from government's budgetary support and 40,000 crores from internal revenues. So my question is, how much has been spent on this warning system, that is the Kavach system? Thank you. And how much on the track upgradation? Thank you. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, कवच एक स्वदेशी नई टेक्नोलॉजी है और आज के तारीख में 1465 किलोमीटर दक्षिण मध्य रेल पर कवच लग चुका है। लगभग 3000 किलोमीटर जो अभी दिया है वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा मार्ग पर उसका काम चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, दूरसंचार टावरों की स्थापना करना, स्टेशनों पर उपकरणों का प्रावधान करना, लोकों में उपकरणों का प्रावधान और ट्रैक साइड उपकरणों की स्थापना, ये अभी काम अध्यक्ष महोदय चल रहा है। माननीय राकेश सिन्हा जी। माननीय राकेश सिन्हा जी, प्लीज। उपसभापति महोदय, धन्यवाद। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
मिलेट्स के बारे में, श्री अन्न को के बारे में यूनाइटेड नेशन में रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति मिली और मिलेट्स का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जंक फूड को विस्थापित करके मिलेट्स यानी श्री अन्न को प्रमोट करने की कोई कार्यक्रम रेल मंत्रालय के पास है, और रेल में भी जो भोजन दिया जा रहा है उसमें मिलेट्स को देने का प्रावधान कर रहे हैं क्या? धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय सदस्य की जो सूचना है मैं उनसे मिलकर इसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। माननीय निरंजन वीसी जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, coach washing plant at Kontabanji and railway under bridge has been sanctioned by East Coast Railway since last 2 years, but the work has not been started. So I would like to know from Honorable Minister when the work will be started. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, ये कवच के बारे में पूछा गया प्रश्न है। अगर माननीय सदस्य को अगर इसके बारे में जानकारी तो मैं समय दूंगा और चर्चा करूंगा। थैंक यू। ऑनरेबल ए रहीम, योर क्वेश्चन। Sir, every life is very precious. Sir, in the past years, many lives have been lost on the track. Sir, including trackmen and trackwomen. Sir, 361 workers died on railway tracks in last 5 years. Sir, my question, in how many railway divisions has red check device been fully implemented? Red check device. Thank you. सभापति महोदय, कि ये जो मृत्यु होती है, सभापति महोदय मैंने तो आंकड़े आपको बता दिए हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उनकी जो मृत्यु हुई आज के तारीख में आंकड़े मेरे पास नहीं, मैं सभा पटल पर रखूँ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, ही विल कीप। क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर अमर पटनायक। Sir, greenhouse emissions are at the core of the discourse on adverse climate effects. The reply, the ministry has said that they are not monitoring industry-wise or even industry company-wise any data on the emissions made, carbon emissions, greenhouse emissions made by each of the industries. So can I make a suggestion to the Honourable Minister, since the Minister is also here? Please question, Doctor. The question is, the suggestion, which is by way of question, that you could have a portal, just like the Minister of Corporate Affairs has a CSR portal, where companies upload whatever is the greenhouse emissions made by them, which is available to public and other industry competitors, so that a fair amount of environment ecosystem is developed for controlling greenhouse emissions company-wise, because that is what is ultimately going to matter. Honorable Minister. The government should not be interfering in every aspect of every industry is a principle that we uphold, because making such data in the public domain could also harm the interests of India's export competitiveness, our export performance. And therefore, individual company-wise data is not something that the government would like to interfere in. However, this is one government which has always been very conscious of our global responsibility, has been a part of the solution across the world ever since the Paris Agreement in 2015 at COP21. India, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, has been at the forefront of forging consensus and ensuring that the world wakes up to this climate crisis. We are, in fact, very proud that India as a nation is one of the few countries which regularly submits our biannual UNFCCC report about our performance against the nationally determined contributions of 2015.
We are the best performing country amongst all the G20 countries when they were ranked by an independent agency. And therefore, the government is focusing its attentions at the macro level, whereas industry suo moto, on their own, thanks to the consciousness that has been generated in the country, are looking at their own processes, looking at improving their own processes, looking at playing an important positive role in addressing this problem of climate change. Dr. Amar Patnaik, second supplementary. Sir, may I suggest to the Honorable Minister that in the reply they have mentioned that the India's Carbon Credit Trading Scheme 2023 has been put in operation. It cannot be put under operation unless you have industry in every separate company-wise the data of greenhouse emissions and carbon emissions. However, the second supplementary is whether a decarbonization pathway has been prescribed for each industry, each company by way of notification, and that is being reviewed so that we achieve the targets which you mentioned of the Honorable Prime Minister to make net zero by 2070 or even earlier. Honorable Minister. Well, Chairman, as regards the carbon credit trading system, the scheme will be, benefit will be taken by those who prepare that data and who are able to demonstrate that they are eligible for the carbon credits. In a way, it's the government's efforts to encourage more and more companies to come within the ambit of this scheme, to take benefit of this trading scheme. And therefore, we believe that the persuasive approach and a more consensus and taking people together, industry together, is the right way to achieve these goals. As regards the overall India contribution to greenhouse gas emission reduction or to addressing the challenge of climate change, extensive data is being collected by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Extensive research is being done in different sectors on our ability to bring down the carbon emissions, to create a carbon sink, both adaptation and mitigation measures. India is at the forefront of these measures, and I can assure the Honourable Member through you, sir, that India will relentlessly pursue the path both of inclusive growth and sustainable growth. Dr. Ami Yaznik, third supplementary. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, I have seen the reply given by the Honourable Minister, and it's very clearly said that there is no database which has been formed for the cement industry. So there is no greenhouse gas emissions database which you have. You do not have a special budget also for this particular industry which is carved out for treating the greenhouse gas emissions. Given this situation, you talk about inclusive and exclusive and sustainable growth. You have committed net zero emissions at the international level, but you do not have a roadmap or a budget or a plan, either shorter or a longer, for the cement industry, which is one of the largest sectors and which contributes to the construction industry as well. So when you do not have this, how would you go for emission trading, carbon credit trading, without having anything or a roadmap in place? So all these hollow statements do not give concrete examples of how you are going to bring zero net emissions at the international level. Honourable Minister. Honourable Chairman, sir, I think the same question was agitated by the earlier speaker, but I would like to repeat. It was more force this time. Yeah, I would like to inform the Honourable Member through you, sir, that what we have written is, the question was regarding current greenhouse gas emissions from the cement industry, broken down by individual companies, production unit-wise. So our reply relates to the question that we don't have every production unit's data for every industry running the cement plants. The country is collecting data for different sectors which are recognized as contributing to the greenhouse gas emissions at the aggregate level. Industry bodies are working in consultation and collaboration with the government to address these issues. Cement industry is a very, very important sector of the economy. They are on suo moto, recognizing the global problem and are taking necessary steps
for mitigation of the greenhouse gas emissions. I think Indian industry today, and I'm proud to say this on behalf of Indian industry as the industry minister, the industry in India today is self-reliant. The industry in India is Atmanirbhar. They are not looking for clutches for everything that has to be done. They don't look at the government for every small thing. They are not looking at government subsidies, and only after that they will act in the interests of the country or the nation. So I think the important thing to be noted is that industry is conscious of their obligations. As regards the carbon trading scheme, the Bureau of Energy Efficiency is already, as per the scheme, if you will care to go into the scheme, undertaking studies for the sectors which are obligated to be covered under the scheme, and accordingly they will work out the targets, they will work out what the incentives or what the credit should be given to each industry for improvement. Those targets in due course after the study will be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and it is only after that that they will be able to start giving the carbon credits. The scheme has been notified, the trading process has been brought to fore, the actioning of the scheme is under process. Thank you. Trading, it was already there in place. It's not a new thing that has come. And Gujarat had one of the industries which is topping the list in fluorochlorocarbons. So it is not a new thing. You already have a roadmap. So how are you going to implement it? That is the question. Honorable member, I didn't hear you. What did you say? Gujaratis? Industry which is already dealing in this emission trading. So it was already there, put by the UPA years, during the UPA years. So there is already a roadmap. You just have to follow it. But I think you are perplexed and puzzled how to go about it. I'd like to, sir, I'd like to... She's appreciating you. I would like to thank the honorable member for having highlighted how the Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, was at the forefront of the fight against climate change. In fact, Honorable Chairman Sir, the important point to be noted is when the world was waking up to the challenge of climate change, Vice President of one of the global superpowers, the world's largest economy, came out with a book called Inconvenient Truth. But Honorable Prime Minister, in response to that, said, as the Chief Minister of Gujarat, that for us in India, we knew this inconvenient truth for generations and centuries, because India consciously respects nature, respects every aspect of nature. He came out with Convenient Action. That was the book Prime Minister Modi wrote. Convenient Action. He consistently, as Chief Minister, whether it was the first solar power unit in India, whether it was the first wind power unit along the canals, I think Prime Minister Modi has demonstrated through action, right from the last 23 years, where he has led the country in one form or the other in different initiatives. His sensitivity to the environment and his commitment to make India a global player when it comes to addressing the challenge of climate change. Shri Anil Desai. Honorable Minister. First supplementary, Shri Anil Desai. Mike. Yeah. Sir, thank you, Chairman, sir. Honorable Agriculture Minister has given a very elaborate, in fact, I'd asked specific questions, but going beyond the scope of the questions, the answer is very elaborate. I'm going by the answer which has been given, and in the answer, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been emphasized. During the year 22-23, 1175 lakh farmers' applications were enrolled, and the funds allocated in the sense it is taken that claims which were paid were to the tune of 15,500 crores. So if we go by, because the
in PM FBI, which was introduced in 2016, it needed improvement every year because the farmers' woes on the ground were never heard. And if we go by the answer itself, that 15,500 crores came by way of claims to the farmers, and average farmer gets around 1,322